एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बच्चे इस तरह आता है, a 45-year-old female present to you with complaint with the right hypochondrial region pain and the pain at the right hypochondrial region pain and upon investigation the patient confirmed that the patient has a dark urine and clay color stool. Upon examination you observe the yellow discoloration on the skin of the patient which shows the basically jaundice, and upon investigation there is a high level of direct bilirubin or the conjugated bilirubin into the patient. What will be your diagnosis? कोलिडिकोलिथियासिस। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलिडिकोलिथियासिस। अगर इसी कोलिडिकोलिथियासिस के अंदर अगर हम ये मेंशन कर देते हैं बच्चों कि इस पेशेंट को फीवर है और टैकीकार्डिया है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? कोलेंजाइटिस। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? एक तरह का कोलेंजाइटिस। ठीक है, ओके। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है, आप साहब खड़े हो, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक तरह का a 50-year or the 45-year-old male present to you with complaint of the fever and the patient low grade fever, the patient has the tenderness at the right hypochondrial region, the patient has the history of eating foods from the maximum time from the restaurant, from the local restaurant, and the patient upon examination there is a jaundice there is a yellow discoloration is observed which shows the jaundice, but upon investigation the ALT and AST level is elevated. What will be your diagnosis? ALT and AST level will be